Hello everyone, you're watching Cricket Next. I am Suramya Kaushik. Well, the day 2 of WTC 2023 final has ended and what a disappointing show today. ना तो बॉलिंग में कुछ अच्छा हुआ, मैं पहले लाइव शो सुन रही थी, वहां पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी, अब बैटिंग में भी नजर आ रही है. इंडिया हैव पोस्टेड 151 रन्स, आधी टीम बाहर जा चुकी है. 469 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने लगाए थे. क्या ये जो डूब रही है नैया, इसको कोई पार लगा सकता है या फिर ये डूब चुकी है? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और उसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं चेतन नरूला, ताउस रिजवी एंड सौम्य कपूर. हाय चेतन, हाय ताउस एंड हाय सौम्या. हाय. चेतन, मैं आपको सुन रही थी जो पिछले लाइव सेशंस हुए, आप काफी कुछ बता रहे थे कि कि कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए. बॉलिंग के बारे में हमने काफी ज्यादा बातचीत करी, अब बैटिंग के बारे में बात करते हैं. बॉलिंग की तो जो डिसअपॉइंटिंग कहानी थी वो एक तरफ हो चुकी है. यहाँ पर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 13-14 रन आएंगे टॉप ऑर्डर से? रोहित आउट, गिल आउट, कोहली आउट, पुजारा आउट, 13-14 रन बनाया, ये एक्सपेक्टेशन थी क्या आपकी? Yeah. You were pretty much expecting. Yeah, Oh God. I was expecting this. Wait, I'll take your comment. तब तक पूछ लेते हैं सबसे. ताउस, आपकी यही एक्सपेक्टेशन थी टीम इंडिया की बैटिंग Not से? at all. We have दिग्गज खिलाड़ी in the squad. Okay. और सौम्या क्या लगता है? रोहित शर्मा से थी. Sorry for that one. Yeah. Well, like for me, रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा. विराट कोहली से नहीं थी तुम्हें विराट कोहली से नहीं थी. मुझे गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे तीनों से नहीं थी. चेतन, डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा था कि गिल और कोहली काफी बातचीत हुई है कि अच्छे फॉर्म में है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, T20 से टेस्ट में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, दे वोंट टेक लॉन्गर टू स्विच टू मोड्स. बट क्या हुआ यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये. Like I said, I was expecting 50 for 5 to be very honest. ठीक है. Okay. मतलब अगर ये लोग फर्स्ट बैटिंग करते तो 50 for 5 था यार. 50 for 5 था वो, इसीलिए उनको भी मालूम है कि 50 for 5 था, इसीलिए तो उन्होंने पहले बैटिंग नहीं किया. ठीक है. So because the braver decision would have been to bat first, see out the morning session. Look, अभी to say कि बहुत अग्रेसिव खेलते हैं हम लोग, आप रोहित शर्मा की बैटिंग देख लो यार. मतलब what was he trying to do? 21 में he was so successful in 4 test matches in England because he was taking his time. He was taking his time to get going and everything. आप अगर शॉट्स खेलते हुए बाहर आओगे and these were यार, आपको इस टेस्ट मैच में इससे अच्छे बैटिंग कंडीशंस नहीं मिलने वाले थे. ठीक है. And you just came out batting, taking your playing your shots, smashing and pulling and this and that. मतलब क्या है, मतलब मैं तो अपनी शॉट खेलूंगा भाई, मैं तो अपनी शॉट खेलूंगा. सामने 400 आफ्टर मैच भी वो यही कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं यार, ऐसे मैं तो अपने शॉट्स खेलूंगा, ये वो तो यही तो जो आप बात कर रहे हो भाई, इसी के लिए तो ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, जो आपने फिर हमें बात कही कि चेंज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. Let's be honest, it is time to recognize that Rohit Sharma is a very pathetic captain. ठीक है. It's very poor captaincy, very poor leadership. He's not read the conditions right. He's screwed up the playing 11 not just once. T20 World Cup team was also screwed up क्योंकि आप दिनेश कार्तिक को नंबर 7 पे खिला रहे थे. आप चहल को खिला नहीं रहे थे. मतलब पिकनिक जा रहे थे क्या दिनेश कार्तिक कि मेरे को ले चलो, मेरे को खेलना है? मतलब डिज्नीलैंड जा रहे हो क्या? And he's thanking Rohit Sharma. He's thanking Rohit Sharma, selecting him on Instagram and this and that. आप पर्सनल फेवर्स कर रहे हो क्या? आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, पर्सनल फेवर्स कर रहे हो. यहाँ पे भी आप जडेजा को खिला रहे हो. जडेजा ने रन बना लिए, बहुत बड़ा एहसान किया हम पे रन बना के. यार if your top order is 71 for 4, जडेजा 1000 रन बना ले, क्या घंटा कुछ नहीं कर सकते यार आप? ट्रू. काफी स्मूथ अप्रोच लगी है. ताउस से जान लेते हैं एक बार, चेतन, ताउस से जान लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन बैटर्स से कि अच्छा स्कोर करे, बड़े शॉट्स लगाएं, ऑल्दो इट्स टेस्ट क्रिकेट, बट कुछ भी नहीं हुआ. वो एक चौका देखने को मिला रोहित से, लग रहा था कि अरे कुछ तो आज अलग सी शुरुआत होने वाली है. बट ताउस, क्या हुआ? आपकी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं मीट अप हुई? नहीं, शुरुआत अलग सी होने तो नहीं वाली थी, बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि रोहित से तो मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज दी कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. और यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर्स तैयार बिल्कुल ही नहीं थे. आपके पास समय नहीं था, आपके पास वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही थी आईपीएल के दौरान.
आपको डिवाइड कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मगर सारे के सारे सब प्लेयर्स सारे मैचेस खेले। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा के नहीं आती है। ऑब्वियसली ही टुक द डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन ऑफ नॉट प्लेइंग आर अश्विन, वो लेट रियलाइजेशन है। और दूसरा उसके अलावा ही इज क्वाइट, मैं कहूंगा रिएक्टिव कैप्टन रादर देन प्रोएक्टिव। विराट कोहली की तरह नहीं है जो अग्रेसिव वो ऑन द बॉल ऑलवेज रहते हैं, वैसे दैट्स हाउ रोहित शर्मा हैज बीन। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रिपरेशन जो है, समय नहीं मिला। ये 3 मैच का, जैसे हम पहले बात होती थी, 3 मैच की टेस्ट लेकिन सीरीज है, ताऊजी ये भाई, एक मैच की है। यहाँ पर आपको शूट यहाँ आउट पर खेलने का एक ताऊजी चीज मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ, जितने भी हमारे लाइव शोज हुए हैं, श्रीनी भी आए, उन्होंने भी ये बात कही थी इससे पहले कि ये सब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनके लिए वही स्विच वही करना मुश्किल नहीं होना चाहिए T20 नहीं से नहीं, टेस्ट। ऐसा नहीं, क्योंकि आप बर्नआउट कर रहे हैं। आप देखिए लगातार खेलते आ रहे हैं। आप पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले, उसके बाद उसके पहले न्यूजीलैंड खेले ओडीआईज, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अलग कंडीशंस में खेले जहां पर टेस्ट विकेट्स डिफरेंट हो जाती है और इंडियन कंडीशंस है। फिर उसके बाद आप आईपीएल खेले, कभी ऊपर अलग अलग फॉर्मेट्स, और फिर आप यहाँ ताऊजी इंग्लैंड में भाई, यहाँ पर सीमिंग कंडीशंस में खेल रहे हैं जहां अगर पर आपको बहुत पता अच्छी गेंद पिच किया इन लोग, इनकी जो लाइन और लेंथ, ब्यूटीफुल लाइन और लेंथ बाय ऑस्ट्रेलिया। आई मीन ये सारे के सारे खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ जो परफॉर्म किए, ट्रेविस हेड, ये सब खेल रहे थे, सब तैयारी काफी लंबे समय से कर रहे थे। उनके मिचेल तो फिर स्टार्क, स्कॉट पुजारा को बोलर, ये क्या सब हुआ खेल था, रहे थे। उसको पुजारा को भाई, क्या हुआ? ताऊजी भाई, एक पुजारा भी मिनट, तो काउंट में पुजारा खेल ही रहे डिवीजन 2 थे। खेल रहे थे, हाँ डिवीजन 2, वही ताऊजी तो भाई, वो खुद ही फेल टू रीच द डिलीवरी। सौम्य, I mean, हाँ international reputation, we expect a lot from them. Unfortunately, I mean, this is the same team almost. रोहित और विराट कोहली नहीं थे, but this team bounced back in Australia, जहां पर हम हिस्ट्री क्रिएट किए। But then you had a long series, 4 मैच, समय था आपको बाउंस बैक करने का। यहाँ पर बिल्कुल समय नहीं है, नहीं, आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन ताऊजी I'm भाई, sorry, and ताऊजी भाई, the board has to take the यहाँ पे चीज responsibility. The board has to take the एक responsibility. No chief एक selector, चीज मैं यहाँ बोलूंगा, no अगर workload आपको management. अगर आपको बाउंस बैक की बात करनी है, तो आपको फॉर्मेट पता है ना, आपके पास वन ऑफ टेस्ट है। अगेन दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, और मैं चेतन भाई की बात से बिल्कुल बिल्कुल अग्री करता हूँ। दिस इज अ पैथेटिक कैप्टेंसी। आपको अजिंक्य रहाणे ही 36 ऑल आउट से लेकर के सीरीज जिताने तक लेकर आए ना। बाउंस बैक करने का टाइम था नहीं था वो एक अलग बात है, वो बायलैटरल टाई था, ठीक है, फॉर्मेट सेम था ना। आपको आपने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ड्रॉप कर दिया ना। हाँ, गो ऑन स्पीक। या सो आपका रहाणे जो एक कैप्टन था, आपको वहां से वो वापस लेकर आया, सीरीज जिताया ना। दिस इज प्योरली ऑन द स्किपर्स, ऑन द स्किपर। That was ये a जो miracle, yaar. That Australia series was pure वो भी beauty, miracle. No, That was no, you miracle. That can't was say not that. stat. तीन I मैच mean, मिरेकल नहीं beautiful. होते, तीन Rishabh मैच Pant, मिरेकल नहीं not होते, taking away the credit from that तीन मैच मिरेकल extraordinary नहीं knock, होते which doesn't come That every was day. see, उसमें। देखो अच्छा, दूसरा दूसरा उसमें यहाँ में पॉइंट, यहाँ में I एक mean, you पॉइंट did not बनाऊंगा। have players. You did not have. एक You did पॉइंट, not have एक पॉइंट Virat बोलूंगा, Kohli. You did not have Rohit Sharma. I mean, तुम्हारे कितने यहाँ प्लेयर में एक मेन प्लेयर्स पॉइंट नहीं थे बोलूंगा, यार। okay, fine, कौन fine, एक्सपेक्ट यहाँ कर में रहा fine. था? Okay, I मैं will एक agree पॉइंट 10%, चेतन नहीं भाई, नहीं एक 10% एक miracle पॉइंट था, बोलूंगा कि 10% Yes. miracle था। कैप्टन Chetan, I'll come to you. Yes, Soumya. कैप्टन ने कंट्रीब्यूशन दिया था वहां पे, रहाणे हैड 100। यार रोहित शर्मा का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, आप 11 भी नहीं बना सकते यार, ये कैसी बात है? Okay. आप अश्विन को लड़के क्यों बना सकते? अगर अगर ये टीम मैनेजमेंट का भी डिसीजन है, मैं नहीं मानता। कैप्टन के हाथ में ये भी चीज नहीं, तो वैसे रिजाइन कर दो यार। आपने हम विराट को 11 निकाला, आपका अगला के कप्तान कौन हो सकता था भाई? इधर कोई चॉइस ही नहीं है। आप चेतन, रोहित को भी ये निकाल दे, मिस कोई मैच चॉइस ही नहीं है। वी आर मैच की बात क्लूलेस, कर रहे हो। वी आर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स राइट नाउ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गेम। अगर आप 11 भी अपने जनरल अकॉर्डिंग नहीं बात बना है। सकते, आप अगर 11 भी अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, तो आप भाई कैप्टनसी से वैसे रिजाइन कर दो। ठीक है, मान लेते। चेतन, यहाँ पर बार बार ये सवाल उठता है कि अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी दे देनी चाहिए थी। रोहित शर्मा इज नॉट अ गुड कैप्टन, उनकी कैप्टनसी में ब्लंडर्स होता है, तो क्या ऐसा मैजिकल सा हो जाता अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। Look, this is ifs and buts and this and that. Ajinkya Rahane would have been a good captain if he would have been part of the side, but he was dropped, and he should have been dropped after his form. And let's be honest, he's played 80 test matches. He's not even averaging 40. तो उनको drop किया है, कोई गलत नहीं drop किया था। अगर वो कप्तान होते तो और जल्दी drop हो जाते, क्योंकि वो विराट कोहली नहीं है। The turning point for India's test fortunes came when Virat Kohli said कि नहीं भाई, मुझे captaincy नहीं चाहिए. That episode has cost. And he should not have quit as test captain. But मैंने जो सुना था, मेरे को तो ये था कि भाई सेलेक्टर्स उसको टेस्ट कैप्टनसी से हटाने की सोच रहे हैं। That episode in 2020, जो ये गांगुली वाला और विराट कोहली वाला जो एपिसोड हुआ है, that has cost us so much. It is unbelievable. भाई वो कैप्टनसी T20 की छोड़ रहा है, आप उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो ना, ले बनने दो उसको ओडीआई कैप्टन।
आपको ओडीआई कैप्टनसी भी बनाना है, आपको टीम सिलेक्शन में भी घुसना है. Saurav Ganguly lost a lot of respect at that time. Let's be very honest about it. And that 2020 episode is going to haunt Indian cricket for a long time. अब आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जो है उसका उसका वो है, बट विराट कोहली शुड नेवर हैव. आप विराट कोहली को टेस्ट कैप्टनसी से हटा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर आप उस बंदे को इतना मजबूर कर दोगे कि ही डजंट फील सपोर्टेड एंड ही फील्स ऑल अलोन इन द सिस्टम दैट यू हैव क्रिएटेड, कि वो बंदा टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. और ये उसकी वजह से ही आज हम इस कगार पर पहुंचे हैं, बिकॉज ही वाज एन एक्सीलेंट टेस्ट कैप्टन. मैं ये कह रहा हूं, ही वाज अ परफेक्ट टेस्ट कैप्टन. ही हैड हिज शॉर्टकमिंग्स. अश्विन को नहीं खिलाया उन्होंने इंग्लैंड में, दैट वाज अ नेगेटिव. Agree. But he was a good test captain. तीनों फॉर्मेट में if there was anything good about his captaincy, it was test captaincy. And that was a very very low point for Indian cricket, and we are just starting to realize it now. ठीक है, जब आपसे खो जाता है ना कुछ अच्छा, तब आपको रियलाइज होता है कि क्या खो गया है. ताउस की बात का मैं यहाँ पे जवाब दूंगा कि वो सीरीज मिरेकल थी. Yes, there was a 10%, 15%, आप 20% ले लो, मिरेकल थी. बट एक चीज मत भूलो, what the injuries did was, एक चीज किया इंजरीज ने, एक नहीं दो चीजें की. पहली बात, कुछ ऐसे लड़कों को मौका मिला जो हंग्री थे. वॉशिंगटन सुंदर might not play another test match यार, टी नटराजन might not play another test match, right? बट उनको एक खेलने का मौका मिला, दो खेलने का मौका मिला. फॉर दैट मैटर हनुमा विहारी कहाँ गायब हो गए? Does anybody know, right? So they might not get to play more test matches yaar, or even if they do, maybe 5-10 more. So that was their moment to shine. They were hungry to perform. They did it. The second thing they did was कि भैया आपके तो आधे प्लेयर्स ही इंजर्ड हैं, कोई आ नहीं सकता, कोई, और उस टाइम पे कोविड था, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता. जो एक्स्ट्रास लेकर गए थे, आप 15 खिलाड़ी लेकर गए, 15 एक्स्ट्रास लेकर गए, उसी में से आप नेट बॉलर और नेट बैट्समैन थे, उन्हीं को ही खिला रहे थे ना आप एंड में. What happened was कि जो कंडीशंस हैं और ये फिट है, इन्हीं में से चूज करना है इन कंडीशंस में कौन खेलेगा. So you pick the right playing 11 for those conditions from the options you had. यहाँ पे आप ग्रीन टॉप है, अच्छा 4 खिला लेते हैं, एक स्पिनर खिला लेते हैं, 5 बैट्समैन खिला लेते हैं. अरे स्पिनर तो ढंग का खिला लो. नेथन लायन ने कितनी जबरदस्त गेंदबाजी की है. मैं ट्वीट करने वाला, अरे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आउट करने वाला ऑफ स्पिनर चाहिए, इंडिया के पास है क्या? है, बैठा है, 500 विकेट लेके बाहर बैठा है, ड्रिंक्स देने आ रहा है. 4 बैटिंग आपने नहीं पढ़ी, आपने पिच देखी नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है. बॉलिंग कोच आके कह रहा है कि यार हम डे 1 मॉर्निंग, अरे भाई डे 2, 3, 4, 5 की मॉर्निंग. बिल्कुल. सो ऑस्ट्रेलिया में मिरेकल हुआ है, परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं, और आपने टीम भी अच्छी सेलेक्ट की थी. यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है. और अभी शो से पहले मैं सौम्या को बता रहा था कि ये वन ऑफ टेस्ट मैच है, इसमें आपको अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू रीड द कंडीशंस राइट, यू हैव टू पिक योर प्लेइंग 11 राइट, एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स राइट. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें आपको नहीं मौका देंगी यार, नहीं देंगी. और यही हो रहा है. दिस मैच विल फिनिश टुमारो और 4th डे, डे 1. फिर भी न्यूजीलैंड के सामने हमने still put up a good performance in the last WTC final, which was way better. Australia is way too much better, but I believe that सही कहा आपने. I agree with Chetan कि विराट कोहली एपिसोड डिस्ट्रॉयड इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम, मतलब at least outside the home condition. यहाँ पर आप बहुत मुश्किल, आप तैयार ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आप विराट कोहली को बिठा भी देते तो आपके पास रोहित शर्मा के पास जाना पड़ा. देखिए, we know रोहित शर्मा what kind of a player is he, the character is he, he's quite a reactive guy. He फिर आप इमीडिएट ऑन द बॉल रहने बोलेंगे तो वो रहते नहीं है. मैंने, ही इज नॉट अ somebody who is always on the ball, somebody who is aware, somebody is quick thinker, he is not a quick thinker. तो आपके पास ऑप्शंस आपने खोल के रखा ही नहीं, तो आपने टीम बैठ के डिसाइड नहीं किया था यहाँ पर कि भाई हमको कौन बंदा एक श्योर शॉट कप्तान हो सकता है. तो मतलब एंड में उनके पास ही जाना था. आपके पास सेकंड बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन टीम यही हो जाता है. अगर वो नहीं था तो ऑप्शन और कौन हो सकता था यार? मैं बोलता हूँ, नो वन इज बिगर देन द गेम. अगर आपका कैप्टन रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव, अनफॉर्चुनेटली ये कहने की बात है इंडियन क्रिकेट में, यहाँ पर सब प्लेयर्स ही बड़े हो जाते हैं यार. तो इसीलिए तो 2013 से और 10 साल हो गए, 10 साल कोई ट्रॉफी नहीं है. एशिया कप के फाइनल भी नहीं पहुंच रहे यार अब, which was certainly
सौम्या, यहाँ पर बहुत सारी बातचीत हम कर रहे हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी ऐसी है, कैप्टनसी वैसी है, अच्छी कैप्टनसी नहीं करी है, बैटिंग भी आज उन्होंने अच्छी नहीं करी। अच्छी क्या, बात करने लायक ही नहीं है वो उस बैटिंग के ऊपर, तो हम किस पे बात करेंगे। अगर हम सौम्या बात करें, अगर हम पूरी टीम की, ठीक है, टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में काफी बातचीत की गई है यहाँ पर। आप देखते हैं आपके पास आपके हेड कोच भी है, राहुल द्रविड़ है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। मैं अश्विनी को काफी बार सुनती हूँ कि द्रविड़ की डिफेंसिव अप्रोच रही होगी कि अरे देख लिया जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा। डू यू थिंक ये काम करेगा फ्यूचर में? अब जो हो गया वो हो गया, टीम आज जैसे सिलेक्ट करनी थी कर ली, बैटिंग जैसी करनी थी हो गई, मैं आगे क्या आपको इस होगा? चीज का एक जवाब देता हूँ, मैं सिर्फ इस एक चीज चीज का एक चीज जवाब एक देता चीज, हूँ। ये T20 क्रिकेट में भी नहीं चलेगा ये सब अप्रोच। हाँ बाय ये द वे किसी में मैं भी बोल नहीं देता चलेगा। हूँ, मैं किसी में भी नहीं आपको चलेगा एक स्टैटिस्टिकली बिल्कुल। एक आंसर वर्ल्ड कप में तो देख लिया था हमने किस तरह से मैं इनका पूरा शो था। हाँ मैं सौम्य। स्टैटिस्टिकली आपको आंसर देता हूँ। राहुल द्रविड़ एज अ बैटर एक साइड रख दीजिए, राहुल द्रविड़ एज अ कैप्टन, राहुल द्रविड़ एज अ कोच, ठीक है, उनके पास एज अ कोच भी सिर्फ एक अंडर 19 टाइटल है। यू कैन फिगर आउट। देखिए अगर आपको इस लेवल की अगर बात कर रहे हैं ना आप, एज श्रीनी सेज कि आपको एक टीम मैनेज करने वाला बंदा चाहिए जो आपकी टीम को लेके साथ चल सके। आपको कोचिंग नहीं देनी इस समय, आप राहुल द्रविड़ द लेजेंड को कोच बना दीजिए। क्या फायदा है उसका यार, ये बैटिंग थोड़ी सिखाएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली को, हाँ, उसकी जरूरत हाँ, नहीं है। आपको उस कोच की जरूरत है जो एक स्टर्न डिसीजन ले कि नहीं यही 11 खेलेगी, या यही मेरा कैप्टन है, या यही मेरी टीम है। आप सबको खुश करके नहीं चल सकते, सिंपल सी चीज है। आप नहीं टूर्नामेंट जीत सकते, ठीक है ना। आप कोई भी उठा के, आप उनकी उनकी कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप उठा के देखिए, 2007 बांग्लादेश, वी वर आउट इन द फर्स्ट राउंड। उसके बाद आईपीएल में कुछ नहीं करा, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप दूसरे अटेम्प्ट में आप जीते। 2016 भी हम हारे थे, ईशान किशन जिसमें कैप्टन थे। पृथ्वी शॉ वाली टीम वाज जेन्युइनली वेरी गुड। मतलब अगर वो हार के आती तो एक्चुअली शर्म आती, वो इतनी बढ़िया टीम थी, ठीक है। तो वो टीम ने आपको वर्ल्ड कप जिता दिया। तो आपको वहां पे प्लेयर्स को मैनेज करने वाला एक बंदा चाहिए जो जो सबको एक फर्मली साथ लेके बढ़ सके, ठीक है। तो जो ये मोटिवेटर अप्रोच यार, मोटिवेटर। चलने वाली, मैन मैनेजर मेंटल आपको चाहिए वहां पे, मैन मैनेजर चाहिए। एग्जैक्टली मैन मैनेजर से आप आपकी ये नहीं चल। और ऐसे अभी तो चलिए आप बाहर खेल रहे हैं, आप लंदन में खेल रहे हैं, आप फिर भी कहीं ना एक एक इस चीज को शील्ड कर पाएंगे कि यार ओवरसीज कंडीशन थी। 3 महीने के अंदर ना ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर है, अगर आपने ये नहीं जीता तो बॉस रिटायरमेंट्स के लिए तैयार रहना, फिर अनाउंसमेंट्स के लिए। उसके बाद कोई लुक बैक नहीं इसमें है। भी बात इंडिया एक सेकंड, आपको लग रहा है इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेगा? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात तो नहीं जीत रही। मैं एज अ फैन एक चीज बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कल कोई राहुल थोड़ी द्रविड़ का भूला बिसरा नहीं, अभी कल कोई राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा का भूला बिसरा फ्रेंड आ जाएगा, वो बोलेगा मेरे को एक फेयरवेल दे दो, उसको खिला देंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, जैसे दिनेश कार्तिक को खिलाया था। प्लेइंग 11 भी डैम, प्लेइंग 11 भी डैम। इनसे कोई सवाल थोड़ी पूछ सकता है, इनसे कोई बिल्कुल सवाल पूछ बिल्कुल। सकता है? मैं रविंद्र आज जडेजा 6 लगातार टेस्ट मैच इंग्लैंड में। रविंद्र, यार देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, आई एम नॉट अगेंस्ट रविंद्र जडेजा नॉट प्लेइंग, ही कैन प्ले, ही शुड प्ले। अगर एक बैट्समैन है जिसने ओवर परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में तो वो रविंद्र जडेजा है। बट बॉस, बिल्कुल। दैट इज नॉट द क्वेश्चन, दैट इज नॉट द क्वेश्चन कि आप जडेजा को क्यों खिला रहे हो। द क्वेश्चन इज कि आप अश्विन को क्यों नहीं खिला रहे। वो नहीं खिला रहे, एग्जैक्टली। अश्विन हैज हिज ओन स्पॉट, आपको जडेजा को खिलाना है, आप खिलाओ। आप उमेश यादव की जगह खिलाओ ना, क्या उखाड़ लिया उमेश यादव ने खेल के। सो दैट्स अरे एनीवे, एक मिस्टेक नहीं, एक मिस्टेक समझ में आ जाता है। अश्विन का एक मिस्टेक नहीं माय खिला के पॉइंट बाउंस बैक करो ना, बैट से my point बाउंस to बैक ही my नहीं कर पा point रहे to Soumya was this much कि I don't trust these guys to pick the right playing 15 or 11 for the ODI World Cup। उस पर बातचीत करेंगे हम चेतन, उस पर भी बातचीत करेंगे। पर यहाँ पर जो मेरा अगला सवाल है आप सभी से, मैं ताउस से शुरुआत करूंगी इस सवाल की। ताउस, हम बातचीत कर रहे हैं, अभी चेतन ने कहा कि जिन्होंने ओवर परफॉर्म किया है वो जडेजा है, ठीक है। सौम्य यहाँ पर रोहित शर्मा की बात कर रहे थे। मैथ्यू हेडन ने थोड़ा टाइम पहले कहा कि आप रोहित शर्मा के पिछले कुछ मैचेस उठा लीजिए, पिछले 1-2 साल के, जब जब इंपॉर्टेंट मैच आता है, बी इट आईपीएल, बी इट इंटरनेशनल मैच, रोहित शर्मा वर्ल्ड कभी कप फाइनल, परफॉर्म नहीं करते। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। आप देख लीजिए, कभी वो परफॉर्म नहीं करते। अब तब ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नोबडी 2013 फाइनल सुनो, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, उसमें भी विराट कोहली के रन है, जो रेन अफेक्टेड गेम था फाइनल। इतनी पीछे नहीं जाते, हम थोड़े से पीछे जाते हैं, बातचीत करते हैं इस पे। मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो सबसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट था रोहित शर्मा का, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टूर्नामेंट था, इस जहां से उनका एक्चुअली वो था ना
एक दोबारा जहां से उन्होंने ही स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी, वहां के भी फाइनल में उनके वही बात है ना सौम्या, वही बात है जो हम कह रहे हैं कि ताउस यहाँ पर अगर आप रोहित शर्मा को देखिए, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने काफी कुछ किया नहीं है, उन्होंने काफी अच्छी पारियां खेली हैं, बैटिंग अच्छी करी है। 2021 की बात हो रही थी, ओवल में उन्होंने सेंचुरी लगाई है। 2021 से 2023 तक आते आते क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने के लिए? Yep. नहीं, बेसिकली देखिए, वन ऑफ सेंचुरी बोलेंगे यहाँ पर, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी आपको रोहित शर्मा की अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखेगी टेस्ट क्रिकेट में, जो आपको लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, T20 भी छोड़ दीजिए, जो ओडीआई में दिखेगी। इज अ प्योर एंड प्योर ओडीआई बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट में वो अभी भी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। विराट कोहली तो बहुत दूर की बात है, वो पुजारा के लेवल तक भी नहीं आ पाए, ना अजिंक्य रहाणे के लेवल तक आ पाए हैं। अगर आप देखेंगे उनके परफॉर्मेंसेस, तो कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हैं, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ हिज अनफॉर्चुनेटली टेक्निक जो होनी चाहिए वो कंडीशंस में खेलने के लिए, चाहे वो टर्निंग कंडीशंस हो, डिफिकल्ट कंडीशंस, जब इंडिया में स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने एज एन ओपनर, एक सेंचुरी भी उसमें खेले थे लास्ट सीरीज में। उसके बाद चाहे वो इंग्लैंड कंडीशन हो, जहां पर बॉल मूवमेंट, जहां पर बॉल ने हरकत करना शुरू की, उनकी टेक्निक थोड़ा वीक हो जाती है, क्योंकि ही इज नॉट अ सॉलिड कॉम्पैक्ट डिफेंस। उनके पास वैसा नहीं जैसे होना चाहिए, एकदम सॉलिड। उनका पैर कहीं और आता है, बॉल अंदर आती है, तो ही इज it's difficult for him to negate that in swinging deliveries, which is the reason why he gets out every time. या तो आप बॉल को जरा सा बाहर स्विंग होगी तो वो ऐसा हैंग करने लगेगी उनका बैट, और स्लिप्स या कीपर में। तो दैट परफेक्ट कंडीशंस जब होते हैं ना, जहां पर बॉलर्स को फेवर करें, वहां रोहित परफॉर्म नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ट्रूथ। आप ओडीआईस की बात करें, लिमिटेड ओवर्स जहां पर उनके पास समय है, जहां पर मोस्टली विकेट पाटा रहता है ज्यादा, वाइड बॉल अगर कंपेयर करें रेड बॉल से, रेड बॉल डज अ लॉट कंपेयर टू द वाइड बॉल। वाइड बॉल इज more batting friendly than the red ball, and unfortunately Rohit has not been able to deliver in test cricket that he should have done as a talent, the talent that he is. टीमा जैसे जिन्होंने I लिखा have कि doubts as well. ऑस्ट्रेलिया विल विन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, वेल दैट्स व्हाट एवरीवन सेइंग, यहाँ पर यही लग रहा है। सौम्य, यहाँ पर मुझे इंटेंट की कमी भी नजर आ रही है। ताउस ने ठीक कहा कि टेक्निक नहीं है प्रॉपर, जहां पर बॉलर्स के लिए कंडीशंस फेवरेबल होती है वहां रोहित शर्मा काफी स्ट्रगल करते हैं। पर जब भी आप मैचेस देखिए, मैचेस के बाद के कमेंट्स देखिए, बहुत ही लूज कमेंट्स आते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि रोहित शर्मा इज ट्राइंग। आई रिमेम्बर एक जो उनका बहुत ही वायरल कमेंट है, ही इज लाइक कि अरे यार 2020 में तो कोविड था, मैंने उसके बाद खेला, इंजरी हो गया, तो मैंने खेला तो है ना यार। आई मीन, डू यू एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ रिप्लाईज? आप जब शुरू करते हैं ना, आप फर्स्ट डे से सेकंड डे पे भी जाता है, जब स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड भी आज आए होंगे ना सुबह, तो उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा डे को, ठीक है। आप 2020 में कोविड था, 2021 में ऐसा था, 2022 में ऐसा था, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डे 2 आप क्या कर रहे थे, क्या किया आपने? आप क्रैश से स्टार्ट करके आज अपना मेटल प्रूफ कर देते ना यार। क्या किया आपने? हर कोई रोहित शर्मा की बैटिंग को, कैप्टेंसी को शील्ड करने में लगा हुआ है, हाफ ऑफ द जनता। पैथेटिक कैप्टेंसी, हॉरिबल बैटिंग, 4 वर्ड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ पूरी परफॉर्मेंस। अच्छा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजॉय करते हैं। नहीं, हम प्रेस बैटिंग एंड हॉरिबल यार, मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख लेता हूँ ना फिर। I'll have to bring in Mukesh now here in this live. He's joining us from London. तो श्रीनी को ले लेते हैं हम इस लाइव सेशन में, बात करते हैं क्या माहौल था उधर स्टेडियम में भी। हाय, काफी डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है सब में, किस तरीके का शो रहा, अभी टीम बाहर बैठी हुई है। Well, I mean, from the moment that India stepped into bat, I cannot make any sense of what exactly were they trying to do. I have no idea. And, अगर मुझे अब ये पूछे कि what was the team thinking, what was the captain thinking, what were the openers thinking, I swear I have no idea. With the kind that batting approach, forget the fact that, the fact that they lost the wicket, they lost 5 wickets, उसको छोड़ो, उसको बाजी रखो. I'm just thinking that the very approach that they took from the time they took guard, which you see the balls that were like kind of slightly away from the line of the wicket, and they were happily making merry of the strokes that came their way, the runs that they were getting. Whereas I have been saying this for a while now. I've been saying this for a while that the only thing that you need to do is just stand there.
It just stand there and watch the ball. Because look at Shubman Gill's wicket. Shubman Gill's wicket is such a classic example where he was caught like a rabbit in front of the headlights, figuring out whether that ball is coming in or it is going out. Okay, but I'm saying that this is welcome to Test cricket. I mean, welcome to Test cricket in England once again, which is how kind of. And I somehow felt that we lacked we just didn't have any idea of what kind of approach we were supposed to take. I mean, I get that feeling. I get that feeling. Yeah. Imagine right now, Ajinkya Rahane, that one guy who is not supposed to be in your team is the only guy who seems to be appearing like, kind of he knows what to do out there. That's He'll it. add 40 more. He'll add 40 more tomorrow. In Sorry? his total. He'll add 40 more in his total. Yeah, fair enough. Fair enough. But I'm just saying that the approach, it is the approach that matters. The only wicket perhaps that a batter couldn't have done much is maybe Virat. That ball from Mitchell Stark was like kind of, I mean, literally unplayable. I don't think he got the time to even think. But that aside, look, every other dismissal. I mean, when Jadeja got out, I was thinking कि referral मांग लिया है. That is why he was waiting. I didn't realize that वो 5 seconds were to display disappointment. Yeah. True. So, Srini, क्या लग रहा है? कल Yeah. खत्म- No, I mean, this is Australia's match to lose. This is Australia's match to lose. It is there already. It is there already. I mean, there is nothing to be taken away from this test match from the field now. There is nothing in this test match that you can take away from the field. What you need to do is to get your priorities right once you step off it. And I think I am telling you, today, what you have watched today and tomorrow, probably what you're going to watch, you're watching, or rather, I hope you're watching the final hours of Test cricket careers of some names in this team. I sincerely hope, whatever remains of this Test match will be those final sessions of some careers in this 11. And well, you know why? तुमने तो रोहित शर्मा, you were talking about Rohit Sharma ना? Once again, you were talking about Rohit Sharma ना कि वो press conference में वो जो चीजें बोलता है. It is because of this. It is because of this. See, उनको पता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे. उनको पता है ये लोग आएंगे ही आएंगे. देखो, look at the madness. For one glimpse of Rohit Sharma, for one glimpse of Virat Kohli, for one glimpse, इनको पता है ये यही चीज है. This is what kind of and by the way, this is not the only stretch. The entire street is like this. Yeah, I'll just hold it. Just look at them. So, what can you expect? I mean, but Srini bhai, I mean, talking about getting priorities right, talking Yeah, about won getting the- priorities, yeah. So, what should be the goal right now? I mean, what is the whole atmosphere, the body language of the players? I mean, were they prepared enough? उनका I mean, body, उनका body language तो छोड़ो, उनका body language से कोई फर्क नहीं. I'll tell you what are the priorities. You tell me. अरे boss, February we sacked, we lost our chief selector, right? In February, yeah, we did. right? It is 4 months. It is 4 months. We don't even have a guy heading that committee. It is 4 months now. You have announced a squad for a match as important as the WTC. And who is answerable? Players are not answerable. Okay, fine, understand. BCCI is not answerable. Okay, fine. Is there a selection committee to be answerable? No, they are not answerable. Who exactly are you going to ask this question to? Who are you? It is such a sad state. कि आप किसको पूछोगे सवाल? Everyone is criticizing Ravi Shastri and Virat Kohli ने एक grooming, groom नहीं कर किसी को तो उन्हीं से पूछ लेते हैं फिर. किसको groom नहीं कर पाए ये लोग? So next captain basically, next captain
So everyone has an opinion कि किसी और youngster को groom नहीं करा to succeed to नेक्स्ट be the कैप्टन को ग्रूम क्या करना था? नेक्स्ट कैप्टन तो ग्रूम ही हो चुका था. नेक्स्ट कैप्टन तो ग्रूम हो चुका था. See, I mean, come on. I mean, let's not go by. Ask you a Let's see. Srini, Chetan has a question for you. Chetan, yes, go ahead. हाँ. You said tomorrow should be the last day of some of the last sessions or whatever of some players. Can you name those Huh. players? Yeah, of course. I mean, I really want Cheteshwar Pujara of the world to, kind of. I know whatever it is, kind of loss हो जाएगा Test cricket को बहुत बड़ा. But thank you, boss. Rohit Sharma needs to let me go out of the crowd. They'll hear and they'll take me away. So yeah, I mean, you wanted names, right? You pick every name other than ये 11 को पकड़ लो. ये 11 में से तुम शुभमन, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज 3 और किसको और कौन है? Tell me. Shami probably. कहाँ शामी हो गया? मतलब शामी को तुम खिला लो ये पूरा साल, ये साल खिला लो. But after that what? Rohit has to go. That's it. Rohit is done. I have said this as of last year. Not this year. I have said this as of last year that BCCI made a mistake in making Rohit Sharma the captain. I mean, people abuse me on Twitter. But I said it last year. I said it's wrong. Rohit Sharma should not be the captain of this team, the test team. I said he should be the... Thank you so much for joining with us. Chetan, thank you so much for joining with us. Chetan has to leave. It was great catching up with you. And, well, you have got your name. Who's going to retire after this? Yeah, I got Want to. Thank you so much. Sorry? Bye. Yeah. Because take a cash in hand. One second, I'll go away from here. Where are you exactly? How far are you from the stadium now? पीछे stadium है. पीछे is, you can see. One second. There, that is the stadium. There. Tell me about the park. You can watch the crowd over there. Everyone who's watching our live show, you can check out what's the stadium like, what's the environment out there in London, and how people are still crazy for Rohit Sharma, regardless of how he performs today, and regardless of last remark on what's gonna be after this coming out soon. But क्या होने वाला है, क्या expect? Okay. For starters, I'm saying I in fact was in fact making a list of these things. Check every performance and everything for a while now. Just basic priorities. Number 1, stop allowing your white ball priorities to influence your red ball priorities, which got me thinking when I thought about this point. Tell me, when was the last time that a player came into the test ranks based on Ranji and Dilip Trophy? Can you think of anyone? I mean, I can't think of anyone other than Mayank Agarwal, after Mayank Agarwal. Can you think of anyone other than Mayank Agarwal? Priyank Panchal was in the reckoning for some time. Reckoning to छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ जो लड़का खेला हो, okay, who has not come into the test squad, who has come from the test squad just on the basis of Ranji and Dilip runs. No, I can't see Mayank. There was pressure. Mayank, there was pressure rising in terms of back-to-back years in which he had done well for Karnataka in the Ranji, been the highest scorer, and by virtue of that, he made it to the squad. Other than that, I can't think of anyone. In fact, Srinivaya, my question was, when was the last time an Indian cricketer scored a double 100 outside India? That was something I was wondering. वो तो होगा ही नहीं. So I was. We have Diggaj खिलाड़ी. No, I was coming to that. Yeah, we have big players. We could have. I was coming to the other bit. Is that so let's assume. I'll give you a small. I'll give you another example outside of cricket to make my point here.
let's say that you are, your preferred choice of a meal is rice as opposed to anything else, and you like a certain amount of rice. Okay, Hmm. why exactly is that a preferred choice? I'm a South Indian. My preferred choice of meal is rice than anything else. Why is exactly that case the case? Because I have over the years gotten used to the idea of eating rice because of where I come from and the family I belong to, right? So what am I Right. trying to push here? The case that I'm trying to push here is that I'm in the habit of it. So my appetite is a result of what I have been continuously doing over a period of time. Get it? Hmm. Same Right. stands true for anything that you are adapting or consuming in life. Time is what makes things function. Now, True. why am I saying this? Is because you look at this current batsman. You talked about daddy hundreds, double hundreds. Okay, I'll Hmm. come to that. But before that, there was this Indian team, late 90s, post turn of the century until the end of the first decade of the new century, which had the greatest batsmen, some of the greatest batsmen who ever played for this country, or probably some of the greatest batsmen in the world. Okay, they scored runs at home and they scored runs abroad. But it was Hmm. also because while they were who they were, it was also because they were in the habit of scoring big hundreds. They had that appetite. Absolutely. Yeah. Where did they pick True. that appetite from? They picked that appetite from domestic cricket. But does Domestic that cricket, yes. mean that True. but does it mean that they continue to play domestic cricket even after they made their India debut? No, that became relatively less. However, when they played Test cricket at home, the pitches were made to suit our batsmen, and our batsmen knew what their batting strengths were, based on which Hmm. they would go on continuously and regularly scoring daddy hundreds at home in red ball cricket. And that Yes. appetite allowed them to take that hunger and travel overseas. Yeah. Hmm. True. Absolutely. Problem with our guys is in this whole melee and madness to just win a test match at all costs. You are preparing those rank turners, knowing, just wanting the opposition to not score runs at all. In that Hmm. process, you are not able to figure out for yourself if you yourself are good enough to make runs on that very track, right? True. Absolutely. If things have worked for you, and I'm not against the idea of turning making turning tracks. No, I'm saying go ahead, make it. There's nothing wrong, nothing unethical with it. But are you capable of scoring runs on it? That is my question. During Hmm. Muhammad Azharuddin's captaincy, India would prepare turners to suit Rajesh Chauhan, Anil Kumble, Venkatapati Raju and all. But then India also had the batsmen of certain caliber who would stand there and get what was required. अब Yeah. हमारे यहाँ तो हैं हम जो कहा जाता है न घर के न घाट के. आपको ये नहीं पता है कि आप खुद बना सकते हो रन, पर आप चाहते हो अपोजिशन न बनाए, और आप Now, but ग्रीन ट्रैक या स्पेस ट्रैक नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है आप खड़े नहीं हो सकते हो. इसीलिए आपने कल टॉस जीत के बैटिंग नहीं किया. और दूसरा दैट्स आपका इट. इन्फ्लुएंस भी हो जाता है टी20 क्रिकेट का इन्फ्लुएंस, ओडीआई क्रिकेट, टू मच ऑफ टी20 क्रिकेट का भी इन्फ्लुएंस होता है हमारे बैट्समैन पे. दैट्स व्हाई दे आर इन अ हरी टू गेट दोज रन्स. दैट इज वन ऑफ द रीजन आई गेस. एंड ऑल्सो आपने जो पूछा लास्ट पूछा था डोमेस्टिक क्रिकेट, पृथ्वी शॉ इज द वाज द गाय who was picked on the basis of Ranji Trophy, Duleep Trophy, and to answer that question, I mean that was the latest guy, Prithvi Shaw, Duleep Trophy 100, Ranji Trophy maiden 100. So unfortunately, he had to go out after West Indies. उसके बाद वो Yeah, bounce back to I the guess. best. all in all, what sums up I the guess. whole, yeah, they need to do some introspection and then really need to identify what they can do better. I think you already mentioned that after this test, there might be some retirements coming out, or there might be some announcement where players will say that this was their last test. Well, we'll see to Retirements that later. वगैरह is Yes, think expecting too much. yeah. Retirements and all is expecting too much. Retirement के लिए आप रुकोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. आप कर दो रिटायर बस. आप रिटायरमेंट के लिए रुकोगे तो यहाँ कुछ ही नहीं आ रहा है.
Yeah. True, Some players true. have to go. So Okay, then Absolutely, some players have to go, yeah, including some yeah. players Pujara, have which to is go. like That's on what we record. said. Also, Rohit Sharma has after to this think about his Test future. Rohit Sharma has to think about his Test There's future. If he has nothing, to nothing. bring There's in, nothing to think. There's Yeah, nothing to think. Rohit is absolutely. not getting any younger. You're going to start a new test cycle starting 2024. Okay, you're Yeah. starting with the tour of South Africa. So go back to 2018. Between 2018 and 2021, what did we see? We saw India's 17 basically. India's test campaign began with the tour of Australia, went to England, then went to Australia, then played in Hmm. Australia again, then went to England, then came back to South Africa, right? Hmm. That was the whole cycle. So Hmm. I'm saying that same cycle is coming up again with this 2024 tour of South Africa. You'll be going yeah, to South Africa, going to Australia, going to England, then going to England, going to Australia, going to South Africa. It's a five Hmm. and a half, 6 year circle, right? Hmm. So that if you want to make a fresh beginning, why would you consider Rohit Sharma again? Whether he wants to continue or not is secondary. Whether Yeah. he wants to continue or not is not even the question. I'm saying you have to take a call here whether he's good enough and fit enough to continue, which I don't think he is. He needs to concentrate on one format, and that is white ball, and he has got greater responsibilities there. There's a World Cup coming, and I want India to do well in the World Cup. That is the Yeah. responsibility, and that's where I expect Rohit to contribute. As far as test is concerned, I don't mind. I don't mind losing. Hmm. But I'm happy if a But Yashasvi if we have Jaiswal, a a competitive Yash Dul tournament, are going out and losing, and a Sarfraz are going out and losing in cup. I don't. I'm uh, tired of Cheteshwar Pujara and Ajinkya Rane going out and losing. I don't want. true. And by the way, some of the greatest miracle wins that we have had are thankfully not because of the usual names. I mean, yeah, I वो mean, वही I बात don't कर want रहे to, थे. I don't want to Yes, you belittle talked about performances here. I don't want to belittle performances here. Performances are great. I mean, who can forget Ajinkya Rane's century in Melbourne? I can't. I mean, it was as important a knock as it could get on that series. But what I'm saying is, we need to have a bigger appetite. We need to have a absolutely. bigger No appetite. question. I don't think Yes, we have it yes, at the moment. Srini, you yes, were totally yes. right because this was a tournament, right? This was a test we wanted to win and take our all the all the big guns there. आप हारने वाले हो ये टेस्ट ठीक है मेक द शिफ्ट्स आप चेंजेस लाइए खत्म कीजिए have a new But set yes, of that's what Srini said, right, Soumya? That's what he said. You really need to focus on your appetite. And obviously, there are no hopes here in this World Test Championship final. We've yeah already seen 2 days play. What he is saying that let's be hopeful for the ODI World Cup that's going to be here in India. But before that, the team India really needs to impress especially from the players, what they have done. On that note, thank you so much, Srini, for joining with us. Thank you so much, Thals. Thank you, Soumya. It was fun chatting with you all, and let's see what's there for us on day three. Perhaps what people are saying that the match should end at day three, but I want that it should go till day four, and let's just stick to our seats. But till then, let's keep watching this World Test Championship final and see how the performances go from the Australian side as well. Thank you so much, Srini, Thas, and Soumya.